Hi guys, Assalamu alaikum. We're back in the studio today for another very interesting conversation, something that absolutely everybody is interested in, male or female. हमारे साथ हैं डॉक्टर फिजा गुल, स्किन इनका practice है, she's an aesthetic physician and आजकल she's one of the most popular aesthetic physicians in Karachi. Of course, skincare is something which we're always concerned about at any age, through your 20s, 30s, 40s, girls, boys, और प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं एंड उनकी सॉल्यूशंस बढ़ती जा रही हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बढ़ते जा रहे हैं. सो कहाँ शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, क्या क्या कर सकते हैं. मेरा ऑफ कोर्स कंसर्न इमीडिएट मेरा था दैट a lot of you admire that I have really good skin, but मुझे ऐसा लग रहा है that in the last 10 years especially उस पर पिगमेंटेशन भी शुरू हो गई है, उस पर सन डैमेज भी आ गया है and all of that. So I connected with Dr. Fiza and हुआ यूँ कि पिछले महीने में उनके पास गई and she gave me an ointment which was miraculous. मतलब है कि वाकई वो मैंने लगाई, मैंने कही तो there's something special about her concoction and she develops her own creams. So I thought we should get her in the studio and have this conversation. It comes after I have tried and tested her product. And so welcome to the Thank studio. you so Thank you much. for talking to me Thank you and for sharing having your me. expertise. And what I'd also like to share with everybody is that you practice in Dubai and Pakistan. Yes, I'm full-time working in Dubai, Right. like part-time, visiting Pakistan Visiting as a Pakistan. visiting doctor in Pakistan. बिल्कुल. सो बातें तो बहुत सारी हैं एंड स्किन को लेके कहाँ से शुरू करें, इतने ज़्यादा वेरिएंट्स हैं. मगर पहला सवाल मेरा यही है कि हम स्किन मेंटेनेंस जो है, Hmm. किसी भी ट्रीटमेंट से पहले मेंटेनेंस है. Very तो important. इन योर एक्सपर्टीज, इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन, गर्ल्स स्पेशली इन देयर 20s 30s मेंटेन करने के लिए क्या करें आजकल? कि बेसिक रूल जो होता है ना वो उससे स्टार्ट होता है कि दैट यू फ्रॉम द बिगनिंग सिंस यू आर अ किड आपको एटलीस्ट अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए ताकि आपके हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन रहें, आपके एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो. अलॉन्ग विद दैट सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पहले ऑब्वियसली ट्रेंड नहीं था कि सन ब्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट सन ब्लॉक इज़ समथिंग वंस लाइक आपका बच्चा अगर जब 6 महीने का हो जाता है, सिंस 6 month old kid you are supposed to start using sunblock. दैट अर्ली. yes, because raises तो है. सो योर आपकी एक सन एक्सपोजर भी है, आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना. आपकी स्किन एक्सपोज हो रही है कंटिन्यूसली, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिर Yeah. हीट है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए सन ब्लॉक एंड मॉइस्चराइजर इज समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. और इसका डैमेज जो है वो लेटर इन द इयर्स फिर नज़र आता है, किसका? सन डैमेज का. डेफिनेटली अगर Yeah. आप नहीं करते हैं तो अर्ली एज के अंदर आपको स्कूलिंग भी होती है, आपका सन एक्सपोजर भी होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से आप जाते हैं. सो यू नीड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर स्किन यू नीड सन ब्लॉक एंड Right. मॉइस्चराइजर टू कीप योर मेंटेन योर हाइड्रेशन लेवल एंड एजिंग प्रोसेस. इट्स जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई प्लांट है और आप उसको पानी नहीं दे रहे हो. Yeah, of course. सो इट्स वेरी बेसिक. लेटर ऑन आपकी जैसे एज बढ़ती तो आपकी डिफरेंट स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल रूटीन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आई डू बिलीव कि अगर आप मल्टीपल आपकी बहुत लंबी स्किन रूटीन हो और यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी सही नहीं है. वो भी सही इट है. शुड बी बेसिक but good. But good and Yeah. consistent. Consistency is very important. Consistency. Otherwise, it's like you're using a piece of cloth and you're not washing it. Yeah, of course. Oh my God. Yeah. सही है. और दूसरा सवाल सबसे बड़ा for especially women my age, a lot of who will be tuning in to hear this conversation. Aging, उसका नेचुरल प्रिवेंटिव क्या है एजिंग का? बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोसीजर्स तो बहुत हैं, अब आ गए हैं, फ्रॉम बोटॉक्स टू फिलर्स टू टाइटनिंग टू थ्रेड्स टू फेस लिफ्ट्स, मतलब इट इज़ लाइक एंडलेस लेकिन ये सब कुछ कराने से पहले एजिंग को, आई वुडंट से एंटी एजिंग, आई थिंक established all over the world now that anti-aging is not a good word. Also you can't like reverse age. Lekin how to like maintain your skin over the years? एज आई सेड कि आपका बेसिक, अगर आपकी बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो रही हैं, मॉइस्चराइजिंग आप कर रहे हो,
एक सर्टेन एज पर, फॉर एग्जांपल व्हेन यू रीच योर 30s और 40s और 50s, उसकी डिफरेंट स्किन केयर रूटीन होती है. 30s में यू नीड gentle cleanser along with vitamin C to आपकी स्किन के अंदर ग्लो और हेल्थ ऑक्सीडेशन और सब चीज़ों को प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए. along with that, aging का natural process ये हो सकता है just to age gracefully. You can start retinol. Retinol is very important, but again, anything in abusive use is not good for you. Right. चाहे आप पानी अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं वो भी it's not good for you. पानी is like water is very important for us, but इससे आपकी एजिंग एक हद तक, क्योंकि आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो आपकी एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है. फेस योगा इज़ वेरी गुड, फेशियल मसाजेस इज़ गुड, बट नॉट द इंटेंस फेशियल ट्रीटमेंट्स. Right. I would not say that there are a lot of people who are into to get those hydrofacials and facial regularly done like after 2 weeks or in a month period of time, which is also not good, because आप इतना ज़्यादा अगर आप exfoliate और इतनी ज़्यादा अपनी स्किन का बैरियर भी क्या compromise करते हैं. So in moderation everything is good. Basic rule is moisturizer and sunblock along with आपका अगर आपका वो एज लिमिट है कि आप विटामिन सी यूज़ करें, रेटिनॉल यूज़ करें. दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर स्किन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर डैमेज. आफ्टर 25 यू आर सपोज टू यूज़ रेटिनॉल, बट रेटिनॉल फ्रॉम द बिगनिंग आप बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसी पे नहीं जाते हैं, एवरी डे यूज़ नहीं करते. देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस विच वी आर सपोज टू फॉलो. राइट. मेरे ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर वुमेन जैसे एक जनरल फिजिशियन ज़िंदगी में ज़रूरी है, एक डेंटिस्ट ज़रूरी है, एक गायनेकोलॉजिस्ट ज़रूरी है, वैसे ही अब एक एस्थेटिशियन भी ज़रूरी है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कुछ खुद से कर रहे होते हैं, 100%. एंड देन ट्रायल एंड एरर होता है कि अच्छा ये गलत हो गया. खुद से भी इसलिए क्योंकि the time we are living in right now, सब कुछ easily accessible है. Absolutely. Just Google it, और videos हैं, बिल्कुल. bloggers and everything, but everything is not for everyone. Yeah. स्पेशली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें कमर्शलाइज हो जाती हैं. आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, देयर लाइक विटामिन सी हमने यूज़ की, हमें सूट नहीं की, हमें रिएक्शन हो गया, एंड दैट्स समथिंग. आई ऑलवेज टेल देम कि विटामिन सी, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर विटामिन सी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी. अगर विटामिन सी का प्रोडक्ट सही ना हो तो वो आपको रिएक्ट कर जाता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन करा देता है. विटामिन सी आप हमेशा या तो यूज़ ना करें, या तो आप सिर्फ वो यूज़ करें जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हो, जो कि टॉप ऑफ द लाइन हो, ताकि आपकी, और उसकी भी पोटेंसीज होती हैं. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट. आप डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि आपने यू हैव टू यूज द बेस्ट एंड द टॉप ऑफ द लाइन एंड द हाई potency one. No. When you're starting any skincare routine, start with basic and the minimum and the best product. You don't have to apply 5 or 10 products at the same time. Just apply 2-3, but start with good and the basic. Especially it's not because of the trend and the videos and everything. Choti, young girls, they are always, you will find them in Sephora and everywhere. They're into niacinamide because everywhere is this and that. Niacinamide and all these assets are not for everyone. कुछ चीज़ें जो कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने बेसिक मॉइस्चराइज़र में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. मॉइस्चराइज़र एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है, वेदर कंडीशंस के हिसाब से होता है, स्किन क्वालिटी के हिसाब से होता है. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, यू आर नॉट सपोज टू यूज़ any basic moisturizer. You're supposed to use water-based moisturizer in order to prevent yourself from acne and clogged pores. If you have dry skin or combination में you have to adjust according to skin condition. जितना अच्छा आप अपनी स्किन को खुद एडजस्ट कर सकते हैं बेसिक चीज़ों के अकॉर्डिंगली, आई थिंक नो वन कैन हेल्प यू इन सर्टेन वे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू योर बॉडी. आपकी स्किन किसी चीज़ के लिए किस तरह से रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, एंड इफ़ यू वर्क अराउंड इट यू कैन हैंडल अ लॉट ऑफ कंडीशंस. एक चीज़ जो विद एज हम सबको प्रॉब्लम आती है, दैट इज मेलास्मा, नो, पिगमेंटेशन बेसिकली. छाइयाँ जिसको कहते हैं पड़ जाती हैं, और मेरे भी अब अंडर आई खास तौर पे द चीक एरिया और माथे पे भी, which is this one is really bothering me. Like I have a sunspot on my forehead which I'm constantly concealing, but बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है. But you have developed a signature treatment, which is why we want to talk about it today, especially because I'm heading for it. Okay, what is that signature treatment? Okay, so signature treatment, obviously it's my signature treatment, and we have
150 different types of signature treatments. Okay. And I customize, obviously formulation companies सब चीज़ों से होते हैं, लेकिन उसकी जो formulation है according to patient skin condition and requirement. And signature treatment is not only for pigmentation. Signature treatment is for any sort of skin condition. Right. If you're suffering from acne scars, pigmentation, so under pigmentation also let me ये भी लोगों का बहुत ज़्यादा misconception होता है कि pigmentation को differentiate कर देते हैं melasma से. अच्छा. Under pigmentation, hyperpigmentation umbrella, there are different types of pigmentation, melasma, sunspot, freckles, and those kind of skin condition. होते सब pigmentation ही है. Melasma का majority of the जो cause और reason होता है वो hormonal imbalances की वजह से होता है. Signature treatment कैसे pigmentation में help करता है? Signature treatment कराने के लिए I always first like to brief everyone what is signature treatment and how is it helpful for pigmentation. Signature treatment जब हम customize करते हैं तो जो आपके melanocytes होते हैं, जो cells होते हैं, जो responsible होते हैं to produce pigmentation, we just try to control them. We are not targeting to damage them. जब आप damaging पे जाते हैं तो उसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा strong किस्म के agents चाहिए होते हैं, acids चाहिए होते हैं, जो कि in a long run which is not good for your skin. Cells को आप जब control करते हो तो आपका जो cells हैं वो pigmentation produce नहीं करते हैं. इसलिए जब हम patient की signature treatment करते हैं, signature treatment के बाद we try to put patient on a home care maintenance. Okay. That's the reason patient only require one session followed by home care maintenance. But अगर patient का जो before going ahead with signature treatment, patient का scope of treatment समझना बहुत ज़रूरी है. Scope of जो condition है वो understand करना बहुत ज़रूरी है. Pigmentation किसी भी type की हो other than sunspot, it's a chronic condition. Okay. Whenever anyone is suffering from any sort of chronic condition, you can only control it. You can't get rid of it. अगर आप इस चीज़ को understand कर लेते हो, then you'll be able to maintain the result of signature treatment as long as possible. You'll be able to handle your skin condition और उसके जो factors होते हैं आप उनके ऊपर work कर सकते हो, because treatment goes well when you're listening to your body. For example, if someone is going through some hormonal changes or there is iron deficiency, वो treatment कराता है, everything is fine, patient is happy, results are amazing, patient is maintaining. After 8 months or let's say after 2 years or 3 years उसकी pigmentation relapse करेगी. अगर ये concept है patient का कि signature treatment या कोई भी दुनिया की treatment आप करा लें, relapse होगा because it's a chronic condition. लेकिन जब भी आपका relapse हो pigmentation का specifically, you need to listen to your body and find out why. आपकी नींद पूरी हो रही है, आपकी menstrual cycle regular है, आपकी आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपकी कोई और chronic condition या कोई inflammation तो नहीं हो रही है, you will find your answer. The moment you will find your answer, work on it. Right. The moment you will start working on it, again आप उसका relapse control कर लेंगे. So the treatment goes well when you're listening to your body and working towards it. There are 2 factors involved in pigmentation also, internal and external factors. Both plays very important crucial role. आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर 90% औरतों के अंदर it's because of internal inflammation, and that could be because of anything, because being a female we go through a lot of hormonal changes. So आप when you listen to your body, you work on it, आपके result again maintain. There was one patient of mine, I would like to share my experience. Young patient, results were amazing. She got 40 to 50% results, but we were looking for more results. Okay. So I was like, why your results are not improving further? And she's like, no. I was like, please tell me your cycle, your stress levels, and everything. She's like, no, I'm fine, everything is fine. I said, when did you get your labs done? So she's like, 5 months back. So I said, we need to go through them again. So we got her labs done, thyroid and CBC and everything. I think she was 33 years old. She was diagnosed with hypothyroidism. That's the reason. And I told her before getting her labs, and there must be something underlying problem. Yeah. So if we don't target your, if we are not working on the cause, it's always like you're working on the upper layer, or superficially you're working on it, and that
this is how we take our patient, this is how we try to help our patient. That's why alhamdulillah our patients, they are able to achieve amazing results and they're Yeah. able to maintain those results. So this is what we do in signature एक और treatment. बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि कोई भी क्रीम या कोई भी सीरम अगर मैजिकल है तो इसमें शायद कोई स्टेरॉइड या कॉर्टिजोन होगा 100% होता है हाइड्रोकिनोन एक इंग्रेडिएंट है जो कि वर्ल्ड वाइड पिगमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है Okay. एंड इट्स चीप, इट्स इजीली अवेलेबल, स्पेशली इन पाकिस्तान. Patients are using it, doctors are giving it. The only problem with the hydroquinone is when you're using it, it's not a steroid, but it acts like steroid. When you're Okay. using it, you might see some good results. But the moment you stop using it, आपकी जो पिगमेंटेशन अगर 20% थी 50-60 पे चली जाएगी, फ्लेयर वर्स हो जाएगी, फ्लेयर हो जाएगी फ्लेयर अप कर देगा उसको. सो ये जो इस तरह की चीज़ें ना इंस्टेंटली Yeah. जब इवन व्हेन वी डू सिग्नेचर ट्रीटमेंट, ऑल्दो देयर इज ओनली वन सेशन बट द Mm. डाउन टाइम इज लॉन्ग. किसी का 10 days है, किसी का 20 days है, एंड देन फॉलोड बाय हम होम केयर मेंटेनेंस में रखते हैं. स्लोली एंड ग्रेजुअली द रिजल्ट्स विल Which is why I was heading for a signature treatment today. मैंने कहा मैं तो कल भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ and I'm traveling on the 7th and then you told me that it's 14 days you Yeah. need to take care. I said, let me come back and get it done then. अच्छा ये भी, this is something every time patient is asking, अच्छा okay there is downtime, you it's up to you. Yeah. Either you go for multiple number of sessions and still there is a chance to get some result, and there is also a chance not to get any results. Yeah. Or you go either for signature treatment, that's your call complete to make it. Yes, signature treatment comes with its downtime. Along with that, patient मुझसे, especially those patients who are suffering from any sort of pigmentation, वो कहते हैं कि अच्छा प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, प्रोटोकॉल कैसे मैनेज करेंगे. आई ऑलवेज टेल देम forget about the treatment. Yeah. These are the protocols for you even before the treatment and after the treatment. Mm. Why? Because अगर ये protocols हम इसलिए आपको बताते हैं to follow, because we want you to achieve best result Yeah. and for a long duration of time. Hmm. अगर आप ये protocols treatment से पहले भी करोगे तो आपकी skin sustain कर पाओगे, maintain कर पाओगे. अगर आप ये protocols follow नहीं करेंगे before treatment as well, आपकी skin damage होती जाएगी. Just like any surgery, उससे पहले Anything. आपका सारा workup होता है. Anything. It's Labs just होती हैं. नहीं, and आमना ये देखिए ना, पिगमेंटेशन क्यों है? एज आई सेड कि इन्फ्लेमेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल. आपने इंटरनल इन्फ्लेमेशन से बचाना है, एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन से Yeah, बचाना yeah. है. एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड कि लाइट्स हैं, इवन दीज लाइट्स, Yeah. these lights are not good for our skin. So even people, especially those patients or those people who are working at night as well, laptop या light under Yeah. light, they're supposed to apply sunblock Okay. in order to protect. That's new. That's news to me. Yeah. But very briefly, just when you saw my face and my skin last time we met, मुझे अब ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पिगमेंटेशन तो है. दूसरा ये है कि आफ्टर सम वेट लॉस देयर इज लाइक लूज स्किन Sagging. हो गई है, सैगिंग हो गई है नेक पे खास तौर पे. और ये जॉल्स जो हैं वो ज़रा से ड्रॉप कर रहे हैं, मुझे है ज़रा सा. बट आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग इन्वेसिव. Okay. And I feel that all my life I've had very sensitive skin. कुछ भी लगाओ तो वो एक्स्ट्रा रेड हो जाती है. या एक दफ़ा मैंने पता नहीं कि वो अल थेरेपी होती है या कौन सी थेरेपी होती है वो कराई थी, वो एक सिटिंग मेरी स्किन नहीं ले सकी थी. इट बिकेम वेरी बम्पी एंड रेड. तो मैं फिर भाग गई. मैं कहा ये मैं दोबारा नहीं करा सकती, मुझे लग रहा है डैमेज हो रही है मेरी स्किन. Most of the people are scared of getting injectables done. Yeah. It's just that in order to lift your skin, we have to do some sort of injectable. But जैसे for example, जो अब थोड़ा सा sagging की बात करें, when we do even signature treatment, helps to tighten up your skin. Right. It gives you little lift. But जब आप वेट लूज करते हो, वेट लॉस पे जाते हो, एज करते हो, आपका सबसे पहला जो साइन ऑफ एजिंग होता है ना, फैट पैड लॉस होता है, जो कि चीक एरिया पर होता है. सो आपका फैट पैड लॉस होता है तो आपकी सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, एंड द लिगामेंट ओवर हेयर वो उसको होल्ड करता है. तो हमारे नेज़ोलेबियल फोल्ड, मेरिनेट लाइन, जॉल्स और ये सैगिंग सब स्टार्ट हो जाती है. सिग्नेचर ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू लिफ्ट योर स्किन, टाइटन अप योर स्किन, but it cannot give you the volume. Right. So in order to get that volume back, not just कि वो volume नहीं कि आप filled up लगो. Yeah. एक natural volume जो आपका गया होता है, उसके लिए हमें we have to do either biostimulators or fillers. There are non-surgical facelifts also which I do perform. It's just that patient needs to decide कि कौन सा option is suitable and best for them. There are a lot of lasers as well, but lasers में भी आपको volume नहीं आ सकता. Yeah. सिर्फ आपकी skin tighten up होगी. That can be done with signature treatment as well. Morpheus 8 की बहुत लोग कहते हैं. Morpheus 8 is amazing. The only problem with Morpheus 8,
the only problem I have generally with all the lasers and anything which are heat-based devices, unfortunately, in order to achieve great result, you have to maintain a short period of gap between the sessions. But when you're going it that way, स्पेशली जब आप टाइप 3 स्किन से बढ़ती है आपकी स्किन टाइप और एशियन स्किन के अंडर आप आते हो एंड यू आर गोइंग थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट विच आर हीट बेस्ड प्रोसीजर्स, आपकी पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं. सो इंस्टेंट ऑफ फॉर एग्जांपल इफ समवन इज गोइंग फॉर हेयर रिमूवल और हाइफो एंड स्किन टाइटनिंग एंड मॉर्फियसेट, आपने गैप कम बीच में रखेंगे बिकॉज आपको अपने टारगेटेड रिजल्ट्स चाहिए. जब आप गैप कम रखेंगे तो आपको पिगमेंटेशन होने के चांसेस आते हैं. बाकी क्योंकि स्किन एक लिमिट तक आपकी हीट बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद आपकी स्किन PIH में जाना स्टार्ट हो जाती है, विच इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन. सो उसकी वजह से रिजल्ट इतने I would say कि that can be done in combination. अगर आपने एक session Morpheus का करा लिया, combination of treatment according to patient skin condition is always a good approach, because that way you can handle and you can save patient from adverse effect of other treatments. That's the best way. And there's another Sculptra. I love doing Sculptra. हाँ, बहुत से लोग are swearing by it. Sculptra Pro भी कोई है, Profilo still not one of my favorite procedure to perform, because Profilo is something you just have to get it done without any expectation. Okay. So you just get it done if someone is looking for hydration. If someone is getting it done with the concept ke with passage of time my aging process is going to slow down and I just have to get it done because there are no as such side effects and it's good for my skin. But if you're looking for some results and targeted, Sculptra, as I said, ki filler or either biostimulator. Biostimulator mein we have Sculptra, Ultracool. Sculptra is amazing for those patients who are looking for non-filler based lifting treatments, and it's amazing because it lasts longer than fillers. Fillers आपके 1 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं. Sculptra can stay 3 to 5 years, and it's your own collagen. It's your own elastin and collagen production. Painful and expensive. No, it's not painful. It's not painful. It's painful on your pocket. On your pocket, yeah, painful on your pocket and on your waist. But no. वैसे it's not painful. Really? No, I don't know, but the way I do it on my patients. Depends on threshold भी तो है ना. Threshold and the technique. अब तो हर चीज पे पहले numbing तो होती है. And the technique. Technique, of course. Obviously, and the good part is very less amount of swelling. Yes, जिसका बिल्कुल कोई volume mass नहीं है. For those patients who are suffering from like बहुत fast जिनकी aging process हुआ या who went through a lot of chemos और जिनका बिल्कुल muscle mass खत्म हो गया. Rapid weight loss में बहुत ज़्यादा, लेकिन rapid weight loss में इतना नहीं, because अगर आपकी skin में fibrosis बहुत ज़्यादा है ना तो आपकी penetration में थोड़ा सा problem होता है, and it's not that painful. Like out of 10 I would say 1 or 2. Okay. It's not that bad. That's nothing. Yeah, that's nothing. That's still bearable. That's nothing. So yeah, you mentioned lasers, and we've been discussing this off camera as well, that you're not an advocate for too much laser on Asian skins, on Pakistani skins. Why? हम सबने laser कराए हुए हैं, कोई hair removal या कोई laser या कुछ ना. बचपन में मुझे भी कराना था. It's just that कि we need to understand skin type. We need to, as I said, कि आपकी स्किन को अंडरस्टैंड करना कि पेशेंट की स्किन कंडीशन कौन सी है, स्किन टाइप कौन सी है, इफ दिस पेशेंट इज द राइट कैंडिडेट फॉर इट. आई वॉन्ट से दैट आई डोंट लाइक लेजर, बट द प्रॉब्लम विद लेजर इज दैट 99% of the lasers or the device-based treatments are heat-based procedures. Right. Anything which has heat, please stay away from it, especially for being an Asian, because किसी भी procedure में जिसमें heat होती है वो it increases your chances to get pigmentation, it increases your chances of getting PIH. Agar aap combinations mein, and if you're aware of the skin type, if you're aware of the intensity of the laser, if you're able to maintain it, agar aapka, for example, between aapko 3 sessions of lasers are required to get rid of something, anything, hair or pigmentation or scars or anything. You were asking me about Morpheus 8. Morpheus 8 के बीच में अगर आपका for example ideally 2 to 6 weeks का gap होना चाहिए between sessions. अगर आप Morpheus 8 कराते रहेंगे इतने कम gap के बीच के साथ और इतने सारे session, at least 3 to 4 sessions, what will happen, एक तो आपका muscle mass lose हो जाएगा. Along with that, because of the heat, you will get pigmentation. Right. So
what you can do, you can combine one session and then you can combine with other treatment in order to achieve. But agar if there is always a better route. If you can just skip it, or just remove that laser part from your life, that's a right approach. Because being an Asian, अगर हम थोड़े से भी लेजर कराएंगे तो हमें पिगमेंटेशन हो सकती है. So how do we get rid of the hair? Cold lasers. Cold laser? Yeah. Is Pakistan में होता है? बिल्कुल होता है. There are a lot of Really? doctors, they do have And it's the same effect? yes, it's amazing. It's advanced technology. Okay. It's better than the previous ones. Obviously, it's advanced one, and Right. if we have a better option, then why not? Yeah. Why we have to go through something which is not good for her in a Yeah. long run? Maybe आपको उस वक्त ना हो, लेकिन later on because of getting too much heat, आपने skin की pH को disturb किया, तो Yeah. later on in life when you will expose yourself to any intense environment, intense treatment, or intense creams or anything, there is a high chances of getting pigmentation out of it. मुझे याद है एक दफ़ा बाजू पे मैं जब करा रही थी तो आई थिंक उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे दी थी तो वो छोटे 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 बम्प्स बन गए थे. It was like my skin was burnt. Also because a lot of lasers are handled by technicians. They're not qualified No, doctors. they हर don't know हर that. पार्लर में लेजर आप करा सकते हैं अब और तो. lasers सब जगह पे ओरिजिनल है भी नहीं. Yeah, absolutely. Most of the time जो the laser machine you will find, they are not the original ones, they are the fake ones. लेजर भी बोटॉक्स भी अब तो हर बंदा Everything. But सबसे बड़ा एक और एक lasers के साथ it comes with it obviously adverse effect as well. Lasers के साथ दूसरा बड़ा problem ये है कि especially if patient is going through some treatment, Roaccutane oral treatment कर रहा है, या for example कोई और उसने कोई chemical peels कराई नहीं है, unfortunately doctors उसको डिटेल में हिस्ट्री नहीं लेते हैं या फाइंड आउट नहीं करते हैं. व्हेन दे डू लेजर्स, it makes it worse, aggravates the whole thing, and then आपकी pigmentation, and आप जाते हैं hair removal के साथ, आप जाते हैं scars के साथ, and you end up getting pigmentation. Now deal with it because it's a chronic condition. Yeah. Once you have pigmentation, live with it because you have to, because it's a chronic condition. So try and avoid getting those things which are, just use your brain, just use your common sense. आप burn कर रहे हो, do you think it can be a good thing for you in a long run? I don't think so. Not at all. Yeah. So what are most women coming to you like with what kind of problems? क्योंकि एक तो है ना कि cosmetic procedures हैं कि to look better, एक है to maintain. तो अब what is happening? Most of the people are coming with skin condition, something which is obvious. Aging पे, not a lot of people are still into it, especially in Pakistan. If you can't compare it with UAE market and Dubai market, because in UAE people are into they want to look nice and beautification and all those procedures, but in Pakistan mostly people are into now skin care, like skin conditions like pigmentation, acne scars, acne, irritation like rosacea and all those also, but mostly pigmentation or acne scar, rejuvenation, dull looking skin, uneven textured skin. So those mostly in Pakistan people are into that. What would you advise me to get done on my face? Obviously we'll go through this in detail. It's a very personal question. I believe I don't like to suggest patient right away, you need this Botox, you need fillers, because I myself very conservative in terms of looking. अच्छा चलो मैं पूछती हूँ कि क्या क्या चीजें फिक्स हो सकती हैं कि नहीं उसमें. एक तो ये कि ये सनस्पॉट, ये जो पिगमेंटेशन है ये कंट्रोल हो सकती है. हो सकती है. अच्छा, ये जो मुझे हल्की सी सैगिंग हो रही है आफ्टर वेट लॉस, ये हल्की सी टाइटनिंग हो सकती है बगैर किसी. We will first try with signature treatment. Okay. If you're happy with the result, if you feel that you got what you're looking for, then it's fine. I'm okay with a little bit of Botox now. I don't mind. You need Botox. I need Botox. Yeah, you need Botox. And then this pigmentation around the mouth as well. जब signature treatment करते हैं तो we are not targeting one specific point or area. We have to do it all over the मैं तो face. बता रही हूँ कि मुझे क्या मसले हो रहे हैं. And then of course this area. ये तो सब कहते हैं कि हो ही नहीं सकता सही. हो सकता है. हो सकता है. बिल्कुल सही हो सकता है. बगैर उनके थ्रेड लिफ्ट के या बगैर ऐसे को करने के एक आप you don't have to go over the board. आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ कराने की ज़रूरत भी नहीं, especially for people who have already round shape. उन पे वैसे भी approach different होनी चाहिए. For this, we have to combine it with endolift and some Sculptra is amazing in order to get rid of those lines. But for lifting of the skin, either surgical or endolift. Surgical. Sometimes we do it's again patient's decision to make. Sometimes we do fillers over chin area and jawline to make this prominent ताकि आप ये कम लगे. लेकिन अगर आपकी
turkey neck है तो Yeah. फिर then we have to, the surgery is the better option, I'll be very honest. अच्छा अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे मुझे ऐसा लगता है अभी हम वहाँ नहीं पहुँच नहीं, you're नहीं not there, yeah you're asking अभी the अभी नहीं opinion. maybe but we want to avoid getting there so Yeah, there मैंने yeah. वैसे face yoga तो शुरू कर दी है Very good. मैंने कहा and it's actually made a difference आपका posture, आपका while yeah sleeping, आपका pillow, आपका क्या no, height we're है, constantly bent over drink our a lot of phones water, or yeah our because screens hydration की वजह से भी बहुत सारे लोगों की skin यहाँ से बहुत sag sag करती है करती है. absolutely the skin sagging जो है it leads to another very interesting topic और आजकल का जो burning topic है वो है weight loss medications and Ozempic or Mounjaro और अब तो if you see anybody who's lost weight you're like Mounjaro yeah Ozempic you know अब तो nobody's doing it without the aids and I call them aids because I have tried both Ozempic and Mounjaro. and Mounjaro Ozempic did not work on me and I stopped after a while and then I regained all that weight Okay. and then my friend introduced me to Mounjaro but I did it the right way which is why I want that to be a completely different session because मैंने सुना है पाकिस्तान में कराची में खास तौर पे there are so many unqualified clinics that are just distributing Mounjaro and of course it's not the original and they don't come with any kind of base work or labs or guidance and women are suffering. I mean, I know at least 2 people who were hospitalized after the first dose because they overdosed and people nausea, diarrhea and faint and ऐसे तो नहीं होना चाहिए. You will also find counterfeit products in the market, and a lot of Yes. people do approach us and they wanted to go on a higher dose and they are like, we were on Ozempic and we don't want to start with 2.5 Mounjaro. Can we start with 5? Can we start with 7.5? Oh, And man, it's like, no. please, you can go to someone else. This is Yeah. not how we do it. Mounjaro is an amazing product. So just to be clear, you bring Mounjaro to Pakistan Yeah, as yeah, well, right? yeah. We are not just distributing, we do consultation. If I find the patient is the right candidate for Mounjaro, only then we give patient Mounjaro, otherwise we don't, because anything comes with its responsibility. Yes. So you're responsible for whatever you do. Mounjaro at the end of the day, it's amazing, but it's a medication, so you have to be careful about it. You can't be, if you when Mounjaro came out in the market, people started buying themselves and they started dosing. They're managing their dosing according to their preference, which is not the right way. Your doctor needs to adjust your dosage according to your symptoms, your history, your progress, your how much you're supposed to lose. अगर आप हर month increase करते जाएंगे तो आप 5 month में you're done. Yeah. 2.5, 5, 7.5, 10, 15 and you're done. 5 months में you're done and then आपकी बॉडी दोबारा से रीगेन में चली जाएगी और आपकी बॉडी आप ट्रॉमेटाइज भी कर रहे हो बॉडी को. सो देयर आर वेज टू डू इट एंड दिस अगर आप उस सर्टेन वे में जाते हो, and Mounjaro is amazing because it can save you from a lot of different and worse health conditions, chronic bimariyan, and then on top of that cancers. So it's an amazing product. It's an amazing product. I started because I was pre-diabetic. So my doctor actually prescribed it. So I didn't start it carelessly. Or plus I've had a lifelong history with, weight. Trying to manage weight loss. नहीं कभी भी कामयाब हुआ. लेकिन ये कि Mounjaro पहली दफ़ा, it kind of stopped the food noise. It controlled my sugar cravings. And in like first 6 months, so nobody could tell I had lost weight because I did it very slowly. Which is the right way. Which is the right way. And under a doctor's guidance. That's why you don't even have a lot of, Ozempic face or jowls on because इतना उतरा ही नहीं कि Ozempic face. नहीं, लेकिन I like for example, for instance, one of my patient, he was around 140 and then he lost almost 38 kgs till now. But still लोगों को इतना नहीं पता चलता because अभी भी बहुत ज़्यादा weight है to lose and we are following the same procedure. We are not increasing every month. Right. We have to maintain for some period of time, then फिर इसको microdosing पीरियड को इंक्रीज करना पड़ता है पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और उसकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वी हैव टू मेंटेन द डोजेज. अगर ये सारी नॉलेज तो एक नॉर्मल पेशेंट के पास नहीं हो सकती. और मैं ये बार कहती हूँ एनीबडी आई टॉक टू आई से प्लीज डोंट स्टार्ट दीज प्रोसीजर्स और दीज सिस्टम्स योरसेल्फ. Never. Don't do it. I mean, you can get it over the counter, sure. Exactly. But you will not know what to do with it. बहुत सारे यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि
what I like to tell my patient कि अगर आप पानी का भी abusive use start करते हो ना तो उसके भी side effects आपको Yeah. नजर आएंगे. At the end of the day, it's a medication. You can't be misusing it. You can't be taking it for advantage because आपको ये फ़ायदा बहुत देगा. आपकी बहुत सारी different health conditions आपको save करेगा. I was telling you that's amazing for PCOS. It's Yeah. amazing Yeah. for someone who's suffering with PCOS की वजह से आप conceive नहीं कर पाते हो. It helps because आपकी inflammation कम होती है, आपके hormones back to normal जाते हैं, तो आप conceive करने में भी आपको help करता है. Rather than suffering from something else और अपने आप को आप suffer करके रखो, health issues है. I think It's good heart to health lose. के लिए भी अब Amazing. नई research Inflammation. आई है. It Yeah. reduces down your Right. cardiac inflammation, Right. your renal inflammation, liver load कम पड़ता है ना. जब आपका weight lose होता है तो आपकी Yeah. body के ऊपर pressure कम पड़ता है. Heart पे आपकी pump करने का आपका heart load जो होता है वो कम होता है. जब वो कम Yeah. होता है तो obviously it improves your cardiac conditions. So that's why it's मतलब amazing. I don't know what's going to happen after 20-30 years कि research बताया कि ये बड़ा खतरनाक था. जैसे अब हम कह रहे हैं COVID vaccinations जो कराई थी, खुदा जाने क्या जहर डाला हमारे systems में. But as of now, I can say that it's been miraculous for me personally. I have not been this weight for the last 20 years, ever since I had my second son. And it's, and it's, I wouldn't say effortless, but it is like an aid. It's been such a helpful aid. Yes. And it's not कि आपने, it's not magic treatment कि And- आपने लगाया तो weight loss And हो it's गया. just not for obesity. Like there are a lot of patients who are trying to lose weight, but they're not able to lose weight because of some other chronic conditions. Like thyroid के अंदर आपको patient का weight lose नहीं होता है. PCOS में patient try करते रहते हैं, उनका lose नहीं हो पाता है क्योंकि craving, insulin resistance इतनी ज़्यादा increase हुई होती है. This way you can save yourself from a lot of other health conditions. Huh? Also, Dr. Fiza, not just like PCOS or physical problems, even emotional and psychological. मतलब मेरा तो PCOS वाला कोई problem नहीं था, but it was just all emotional and it was psychological. Even that it controlled. You For feel the first good about time, yourself. For the first time in my life, it was like, okay, I have control over what I'm eating. It was a fantastic experience. I'm still on It it. is amazing. I plan to do it for a year, and then I think you should taper off, or I don't know. That's ये भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि अच्छा हमने ना टारगेटेड हमारा वेट वी वांटेड लूज 10 kgs एंड they divided like अच्छा first month इतना होगा, second month इतना होगा, इसके बाद will stop right away. This is not how you're supposed to use it. Yeah. I can understand obviously आपको ये देखना पड़ता है if it's pocket friendly or not. It is an very expensive. It's very expensive, but health comes first. Because अगर आपने एक medication ली तो उसका the right way is to taper off and then get rid of it. Because अब right away you stop using something, आपकी body एक alarming situation में चली जाती है, alert position में आ जाती है. Trauma में like there was something and अब कुछ भी नहीं है. There is nothing. तो आपको you have to taper it off. You have to maintain. You have to go on microdosing, and then slowly and gradually when you feel that you are microdosing? Microdosing उन patients पे होती है. For example, right now, if for example if someone is on 10 mg, I'm on 10 right now. So 10 से आपका अगर आपका ideal weight आपका achieve हो गया and you're good and you wanted to maintain it, फिर 10 को फिर हम taper off करेंगे. Taper off इस तरह करेंगे कि microdosing इस तरह से होती है कि instead of 1 week we will increase the length of the days, extend it to 2 weeks to 10 days. उसके बाद फिर और देखेंगे पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, फिर 10 से फिर पीछे we will take you 7.5 and then taper off, and that's the right way. So do you get a lot of patients who come from Mounjaro? Yes, people are now they're obviously the news is in the market aware of it now. People are getting it done. Yeah. Interesting. And they're all connected. Weight loss, skin care, well-being, just feeling great about yourself. पाकिस्तान में पहले इतनी obviously I would say कि इतनी awareness नहीं थी in terms of skin care, and people used to go to doctor for skin conditions, not for beautification and all those things, and weight loss के ऊपर, health issues के ऊपर इतनी because of social media now people are more aware of it. They wanted to look nice, they wanted to feel good. I always tell patient कि if you are happy with you, आपको किसी का you should not be concerned about कि दूसरे का क्या करना है. If you feel that you are the right candidate for anything, for any procedure, for weight loss, for not, you should feel good about yourself, and people are now getting aware of it. People are coming and they wanted to feel good about themselves. So this is a good sign in Pakistan. This is a good sign in Pakistan. Great.
It was great talking to you, and of course subject ऐसा है कि ये तो इसकी vast हर एक topic पे हम पूरी podcast कर सकते हैं. But I'm going to open the floor to our viewers that what kind of concerns do you have? Do they have about their skin? About concerns about Mounjaro? You know, misconceptions about it, about weight loss, and of course cosmetic procedures. Botox खतरनाक है वो बहुत हवा है कई लोगों के लिए मतलब Still, है still yeah अभी तक लोग absolutely लोग लोग कहते हैं no, we don't want to get we don't fillers. want to get We yeah don't want to get fillers. Migrate कर जाते हैं. Yes, they can migrate, but not if the technique is right, if the product is right. yeah Fillers और botox पे मैं different अपने shows पे बात कर चुकी हूँ. Fillers और botox का भी देखें, as we discussed about Sculptra. yeah Unfortunately, Pakistan के अंदर 99% the products you will find they are not coming from the right source. right They're coming from another origin Mm. like China, Turkey. ज़्यादा टर्की से प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं. तो Right. that's the reason कि प्रोडक्ट की और पर से एक्सपर्टीज़, आपकी टेक्निक, आपकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कि आपको कहाँ उसको इंजेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट इंजेक्ट करना है, so that is amazing. yeah It makes you feel good about yourself Yeah. if you want it to. if you want to It's a very personal. Again, if you think you're the right candidate and that something makes you happy, then do it. If yeah, it's you not something you need have to, have to you don't but have it's to. something you can You can. There is always a door which you have to choose कि आपको कौन से पे जाना है, it's कौन a से पे नहीं. choice It's a choice to make, and luckily we have a lot of procedures which are not non-filler based. Like Yeah. There is polynucleotide, PDRN, and as I said, कि combination is always better, and customized treatments are always better. Of course Keeping patient skin in mind. of course so I'll be back from London around the 16th and we're meeting next month for my signature magic treatment Looking forward. जिसमें देखेंगे कि हम क्या क्या करा रहे हैं Hmm. and we will take all of you guys on board so you can see what the before and after of Amna's skin and kya hota hai. So thank you for your time Thank you and for your having me. expertise, and this is very exciting. Acha hai, I think women should feel good about themselves and they should always have options and choices, and nobody should judge them for their choices, and I think there's 100%. too much shaming involved. And shaming से ज़्यादा, I think बाहर से ज़्यादा जब आपके अपने घर वाले, Of then course, there are a but- lot of women who are suffering, and they have a lot of issues Yeah. happening in the family. They're not happy about it, and it's not something आपकी luxurious treatment नहीं रही है, आपकी need बन चुकी है because you wanted to get rid of something. So take care of your health, because everything starts with if you're suffering from anything. The So core, it begins with the core. always deal with the cause first. Got the cause first, and then everything follows. बिल्कुल ठीक है. 100%. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you.